तो आज हम लोग रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट को क्रियो सॉफ्टवेयर में कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता क्या है। सो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट में रैक जो है कुछ इस प्रकार का एक फ्लैट प्लेट होता है जिसके ऊपर गियर जैसे टिप्स जो है माउंटेड होते हैं एंड पिनियन इज लाइक द स्पर गियर जिसमें कि इस प्रकार से टिप्स माउंटेड होते हैं और ये इसके ऊपर इस प्रकार से रोटेट होके इधर रोटरी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आप जो है डे टू डे लाइफ में अपने व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, फोर व्हीलर्स में स्टीयरिंग मोशन मैकेनिज्म में देखने को मिलता है। तो चलिए क्रियो सॉफ्टवेयर में इसको कैसे बनाया जाता है देखते हैं। So we'll start with new part solid modeling. Use default template option off to choose the millimeter Newton second part solid as our unit system. तो सबसे पहले हम स्केच में आएंगे। स्केच में आने के बाद हम जो है सबसे पहले पिनियन यानी कि गियर को जो है बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हम जो है रैक को बनाएंगे। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल गो विथ सर्कल। हम यहाँ पे जो है सर्कल के साथ में जो है सर्कल गियर के अंदर जो होने वाला होल है उस होल को भी जो है अभी जो है यहाँ पे बना दिया। इससे जो है हमको बाद में फिर से एक और एक्सट्रूड करके जो है रिमॉडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Now since in this particular point we have already created the cylindrical part, now we are going to make the teeth of the that is the gear part, the pinion part. What we are going to make is now we are going to make the particular teeth. So while making this particular teeth, you can make the complete teeth at once, or you can actually use this mirror tool in 2D option with the help of center line, so that we are not supposed to create the complete teeth of the gear. Only the half part of it is actually supposed to be made. So इसकी जो है सबसे पहले हम लोग पूरी कंस्ट्रेनिंग करेंगे and after doing the constraining part, we'll place the center line and choose this particular sketch, choose the tool mirror and choose the center line. Now since we have created this particular teeth, it is still a open loop. We have to make it a closed loop. हम प्रोजेक्ट टूल में जाके इंडिविजुअली उसको सिलेक्ट करेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स जो बन गए हैं उनको डिलीट सेगमेंट टूल की मदद से डिलीट कर देंगे। एज ए रिजल्टेंट सॉफ्टवेयर आपको एक क्लोज्ड लूप दिखाने लग जाएगा। नाउ वी कैन एक्सट्रूड इट। यहाँ पे हम चाहे तो टू सिलेक्टेड ऑप्शन लेके जो है एक्सट्रूड कर सकते हैं and then we can go for pattern of this particular part. You can choose axis and then we can make it a number of copies what we actually need accordingly what the gear is supposed to be made. Now one more thing is actually very much important, that while making it extrude, we have actually doing the cylindrical part, we have actually extruded it in the symmetrical option. So that's why the gear extrude should be also be done either symmetrically or should be selected on both sides, so that actually we can form a complete gear. Now since we have made this particular pinion, so we can save it now in the name of pinion or any nomenclature whatever actually make accordingly. You can save it in the name of the same. So now we'll move to the next part, which will be our rack. So we'll again make sketch of a rack. So we'll choose the rectangle tool option and in that we'll go with the constraining dimensional as well as symmetrical constraints. सेंटर लाइन को लेके हम जो है इसको जो है सिमेट्रिकल बनाएंगे। इससे जो है हमको रेफरेंस लाइन से उसकी जो है दूरी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Now we'll go for extrude. Extrude में हमने इसको जो है सिमेट्रिकल करके जो है डिफाइन कर दिया। Now we'll try to make the rack, that is the teeth part of the rack. तो यूजुअली रैक के दोनों एंड्स में टिथ नहीं होता, अदरवाइज इट विल रोल आउट एंड मूव आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रैक। तो इसलिए दोनों एंड्स पे जो है ब्लॉक होता है जिसके अंदर में की जो है आपका पिनियन जो है मूव करता है। तो वी विल ट्राई टू मेक
simpler way of that particular block that should be incorporated in both sides. So we'll try to place a center line and use the same tool mirror. So now that we have created this particular thing, now we will go for making of that particular teeth. So we'll again make one particular teeth and with the help of pattern tool हम उसको जो है multiply कर देंगे n number of copies. So again we are actually into 2D sketching. तो सबसे पहले हम जो है इसकी जो है proper constraint करेंगे. We'll make the complete part and then we'll go for making of the third dimension. So here actually क्योंकि यहाँ कोई एक्सेस पहले से अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हम इसको मिरर नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे भी आप चाहे तो बीच में यहाँ पे सेंटर लाइन प्लेस करके इसको मिरर किया जा सकता है. But here we are actually going for the making of the complete teeth all at once. So in case अगर कभी भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो you can actually always use this particular option zoom in and based on that you can actually set the particular sketch. So now that the sketch has been created, now we will go to the 3D modeling part where we will go for extrude option, and in this particular extrude option we will choose project 2 over here because अगर हम यहाँ पे दोनों it is rectangle as well as teeth को एक साथ extrude करेंगे तो what will happen is आपका rectangular part का भी pattern copies बनने लगेंगे. That's why what we want is हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टिथ पार्ट का जो है अलग से एक्सट्रूड करेंगे और ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसका अलग से एक्सट्रूड करेंगे. इससे जो है पैटर्न करते वक्त हमको टिथ अलग से सिंपल एक्सट्रूड के रूप में मिलेगा और हम उसको जो है डायरेक्टली पैटर्न कर सकते हैं. That's why we have made the sketch all at once, but we will extrude it one by one with the help of project. तो हम जब यहाँ प्रोजेक्ट कर लेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि जो है क्लोज लूप प्रॉपर्ली बन पाए हैं कि नहीं बन पाए हैं. क्लोज लूप जो है सॉफ्टवेयर खुद से ही जो है उसको शेडेड रीजन के रूप में स्केचिंग में दिखा देता है जिससे कि हमको पता चल जाता है कि नाउ इट्स अ कंप्लीट क्लोज लूप. जब तक आपको ये क्लोज लूप ना दिखे तब तक जो है यू नीड टू वर्क आउट इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है कहीं पे है जो प्रोजेक्ट टूल की वजह से जो है दिख रहा है जिसकी वजह से कि ये एक्सट्रूड नहीं हो पाएगा. Now we'll choose this particular option 2 selected on both sides and we'll choose the surfaces one by one. So now that it has been created, now we'll again go to extrude option और वहाँ पे extrude option में अब टिथ जो है पहले ही स्केच में कर लेगा. अगेन विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ प्रोजेक्ट टूल हम एक एक करके जो है इंडिविजुअली चूज करेंगे टिथ के सारे जो है पार्ट्स को और फिर चेक करेंगे कि वो क्लोज्ड लूप बन पाया कि नहीं एंड देन वी विल गो फॉर एक्सट्रूड. दैट्स इट. क्लोज्ड लूप का शेडेड रीजन दिख रहा है. We can work out this particular sketching. Now it is creating a 3D figure. Again we same चीज हम जो है choose करेंगे to selected option. We will choose both the sides and हमारे पास एक सबसे पैटर्न बन गया. Now we will use the pattern tool with which we will be making n number of copies within this particular area. Now after making this particular now we will be actually going to the assembly modeling development और वहाँ पे जाके हम जो है दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली कॉल करके जो है वहाँ पे कंस्ट्रेनिंग करके जो है सेट करेंगे how this particular pinion is going to rotate above this particular rack. So after setting the rack properly, we will save it in the name of rack. Now we will switch to assembly modeling environment. Over here again we will choose millimeter Newton second as the unit system. Choose assemble tool and call the parts one by one. So first of all we have chosen the rack. But before actually we start with, we have to first of all lay some axes. Otherwise, aligning of them is going to be very difficult. So we have to first of all choose the axis, and after that we can actually lay the axis, and accordingly we will choose the alignment of the two axes. Slider option under constraint mechanism.
तो इसमें हमको जो है दो अलाइनमेंट लगते हैं। एक आपका एक्सियल अलाइनमेंट होता है जो कि आप एक्सिस में से करते हैं, और जैसे ही आपका कनेक्शन डेफिनेटली कंप्लीट होता है यू कैन गो आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर असेंबली कंस्ट्रेंट पार्ट, एंड हम इसके बाद फिर से जो है असेंबली मॉडलिंग बना के हम जो है एक नया मॉडल बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे रैक में जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, इसके लिए हम पहले से जो है एक पॉइंट सेट कर देंगे एंड विल मेक एन एक्सेस, जिसकी मदद से कि जो है हम पिनियन को कहाँ पे पोजीशन करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है वो पहले से ही डिसाइड हो जाए। अदरवाइज जो है आपको पिनियन का शाफ्ट और उस शाफ्ट का जो है प्रॉपर सेटअप जिसमें जो है सिंपल हो सके, that kind of a base is supposed to be created, a fixture kind of thing is supposed to be created previously। तो उस चीज को रिमूव करने के लिए हमने पहले ही जो है एक्सिस प्लेस कर दिया है, और इस एक्सिस को हम एक्सियल अलाइनमेंट के थ्रू जो है पिनियन को यहाँ पे सेट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे कनेक्शन डेफिनेशन कंप्लीट आ जाए we can move on। Now after doing constraining part, we will go to again track body option, and in this particular track body option हम एक बार नीचे आके जो ट्रैक करके जो बॉडी को जो है शिफ्ट करके देख सकते हैं कि वो जो है प्रॉपर्ली रोटेट हो रही है कि नहीं है, एंड साइमल्टेनियसली इन केस उसको जो है प्लेन्स के अबाउट जो एकदम बीच में आके एक पर्टिकुलर जगह पे आपको पोजीशन करना है, तो यू कैन चेक दैट पर्टिकुलर पार्ट आल्सो, एंड किसका प्रॉपर मैशिंग हो रहा है कि उस चीज को भी आप चेक कर सकते हैं। After doing this, we will go to applications, under that particular option mechanism हम choose करेंगे। यहाँ पर अलग से gear option मिलता है, इस gear option के अंदर में आपको rack and pinion arrangement अलग से मिलेगा। We'll choose that particular part और उसमें individually pinion choose करके उसका axis choose करेंगे and mention the this circle dial, and we'll choose the brake axis, एंड यहाँ पर हम लोग कोई डिफरेंस कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, व्हाटएवर इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे ओके करके। नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज वी आर सिंपली सपोज्ड टू गिव अ सर्वो मोटर टू द पिनियन, एंड वी विल बी एबल टू सी कि जो है पिनियन जो है रैक के ऊपर स्मूथली स्लाइड कर रहा है। सो अंडर रोटेशन एक्सिस वी विल ऐड सर्वो मोटर। So now we'll go to joints connection 1, and under rotation axis we'll add a servo motor। Go to option velocity, and अगर 36 डिग्री देंगे तो एक रोटेशन करेगा, अगर 72 डिग्री देंगे तो पिनियन अपने कंप्लीट 2 रोटेशंस कंप्लीट करेगा। Now based on the length of the rack और आप उसको कितने दूर तक रोटेट करके ले जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू considering minus 10 seconds। So this is how it works। So that's it for today, we'll come with some new video। Okay, thank you।